So what is the design thinking? Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Steve Jobs. Steve Jobs is the pioneer of creating designs, man. आज जो भी एप्पल है, my son wanted me to buy Samsung S25. So when I was buying this iPro Max, he asked me, पापा यार एप्पल बहुत हो गया, let's move on to Samsung. The Samsung and Apple का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो Samsung Apple का 10,000 रुपीज का डिफरेंस है. तो ही आस्क्ड मी, पापा चलो ना पापा यार सैमसंग पे मूव करते हैं, सच ग्रेट फोन मिल रहा है. मैंने बोला पता नहीं क्या है. Yesterday news आया Samsung had decreased their price to 36,000, but as 25 wasn't, it just become 90,000. So I said, what this is all about? Are you selling the exclusivity or are you selling the cheaper version to sell your products? I would never go to Samsung. Trust me. Whatever, कितना भी आप प्रीमियम पेटेंट लेके आओ, बिकॉज एप्पल जब उसका मार्केट आउटडेट होता है, दे डू नॉट डिक्रीज द प्राइस, दे नहीं करते, वो आउटडेट करके उसको स्टॉप कर देते हैं. अभी जब 17 लॉन्च होगा, एप्पल प्रो मैक्स का डिसकंटिन्यू कर देते हैं वो. They discontinue it. So it becomes a premiumness for you. If you couldn't buy a Apple 17 Pro, you're still holding the premiumness. That's what Apple is all about. That is the innovation that is being crafted by Steve Jobs, guys. Design thinking approach क्या है, ठीक है? Human centered approach to solving problems creatively and iteratively. लेकिन आइट्रेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट. यहाँ पर हम हमेशा आइट्रेट करते रहते हैं. इस बेनिफिट्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग एड्रेसेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, ड्राइव इनोवेशन, इंप्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. We'll talk about it. There are 5 phases. There are 5 phases of design thinking. The first thing is empathy, define, ideate, prototype and test. ओके, ये 5 फेसेस को गाइस हमेशा ध्यान रखो, ये ही आप लोगों को ऑपरेट करना है. अगर ओनली सिंगल थिंग दैट यू वांट टू टेक आउट ऑफ दिस सेशन इज दैट 5 फेसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग. क्या है वो? एम्पैथी, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट. ओके, तो हमने क्या समझा था, एयरबीएनबी ने क्या किया, उन्होंने पहले प्रोडक्ट को लगाया, $80 उन्होंने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट बेचा, उनको समझ में आया देयर इज अ डिमांड, बट व्हेन दे वांटेड टू स्केल इट, इट डिडंट वर्क आउट. ठीक है, तो व्हाट दे डिड, दिस इज व्हाट दे डिड. उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने यूजर की नीड्स समझे, तो दे एम्पैथाइज्ड, दे अंडरस्टूड द नीड्स ऑफ द यूजर. कौन सी यूजर है जो हमारे पास आ रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है. तो उन्होंने उन यूजर से बात की, विच इज कॉल्ड योर मार्केट वैलिडेशन. दैट्स द कॉन्सेप्ट. व्हेनेवर यू हैव एनी आइडिया, ठीक है, उसको मार्केट में लॉन्च करना, आपका एज ए बिजनेस, you just cannot directly go create some product and launch it. It would fail heavily and you would ingest lots of cost into it. आपको क्या करना पड़ता है, you really need to go and identify whether there is a demand in the market for your product. So what you do, you go and validate your product. So you talk to your possible users and your existing user as well. For example, if I want to improve the GMH, who would be my go-to guys? You. I would go to you and would say, guys, what should I more improve on? What are the other things you feel should be the part of the future version of GMH so that other people can get benefit more? You know, that's how I would talk. So हम एम्पैथाइज करेंगे, विल आइडेंटिफाई देयर पेन प्रॉब्लम. तो जब उन्होंने बात की ना लोगों से, यूजर से, तो आइडेंटिफाई पीपल आर जस्ट नॉट लुकिंग फॉर ए चीप एकोमोडेशन. उनको सिर्फ चीप नहीं चाहिए था कि हमको बस $80 या $100 का प्रोडक्ट चाहिए. वो बोले थे हमको एक्सपीरियंस भी चाहिए यार. यू जस्ट कैन नॉट टेक अस टू ए बेड ऑन सम फ्लोर एंड से कि यहाँ सो जाओ और हमको पैसे दे दो. उन्होंने बोला नहीं, हमें ये नहीं चाहिए. वी वांट टू हैव सम सर्टेन एक्सपीरियंस. उन्होंने बोला एक्सपीरियंस लाइक, यार बीच के सामने हो, थोड़ा मजा आए. हमें होटल बीच के सामने नहीं मिल रहा, पर एक बीच के सामने एक घर हो तो बहुत है, जहाँ पर हम पैदल चल के जा सकें, आ सकें, ऐसा टाइप्स. यू रिमेंबर ऑल द दिस मोटर्स नियर गोवा, सब हाउसफुल रहते हैं. हम वहां पर जाके नहीं डिमांड करते, शैक्स भी चलते रहते हैं. क्यों? बिकॉज दैट गिव्स यू एक्सपीरियंस नियर बीच, यू कैन गो वॉक एंड एवरीथिंग. दैट इज द एक्सपीरियंस गाइस. फिर देन क्या है, मॉर्निंग सनसेट देख पाए, मॉर्निंग सनराइज देख पाए. बेसिक ब्रेकफास्ट भी मिल जाए तो चलेगा, हम ब्रेकफास्ट बाहर जाके कर लेंगे, वी कैन ईट द फूड आउटसाइड. बट बेसिक थिंग can create experience. Now, when I say experience, think about Starbucks all the time. What kind of experience they create? Secondly, they define the problems. So based on the pain points they have identified, they define the problems. कि ये यूजर को ये प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है. फिर उन्होंने उसको प्रायोरिटाइज किया कि what are the first 3 top problems they need to work on, and they ideate on it that how can we resolve this problem step by step. पहला प्रॉब्लम उन्होंने बोला कि क्या इशू आ रहा है, उन्होंने बोला हमको एक्सपीरियंस चाहिए, पर आपकी साइट को एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता. आपकी साइट ऐसे लगता है कि वो जस्ट सेलिंग सम चीप एकोमोडेशन. तो उन्होंने बोला ओके, दिस इज गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो उन्होंने आइडिएट किया. उन्होंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट को रिन्यू करते हैं, लेट्स क्रिएट अ फ्रेश लुक ऑफ द वेबसाइट. देन जो भी फोटोज हैं उस फोटोज को अच्छे डालते हैं, वी विल मेक ए स्टैंडर्ड हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ्स. वी विल क्रिएट व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस दे कैन गेट एंड एड इट ऑन टू दैट लाइब्रेरी ऑफ दोस फोटोज. So that's the first problem they have solved.
The moment they solve the ideated and created the prototype out of this and publish it and test it in the market, they started seeing lots of traction. So remember, whenever you want to build a product, whenever you want to improve a product, you really need to keep building on it, keep building on it, keep building on it, and iterate till the time all of your user problems are well taken care of. So अभी सोचो उन्होंने क्या किया? They empathize it, they empathize the user, and that's why empathy in leadership is very important. जब भी हम empathy बोलते हैं, कल हम जब सेशन अटेंड कर रहे थे, ट्रेनर ने बोला, so do you feel empathy is a safety net? No, it's not a safety net. It's a must-have trait you need to possess. Without the having empathy, a leader cannot be born, cannot be created. So empathy is the must thing. Then you need to define the problem, you need to ideate the problem, you need to prototype it, you need to test it. That's how the success is done. Why people spend lakhs of rupees on R&D? Because they want to iteratively move on to the next version, next version, next version. Guys, market बहुत ही cruel है, ठीक है ना? The moment you feel that you are on the top, trust me, you will start declining the next day. The market is so tough. ठीक है? You buy a car and the next day some new technology comes in and you would say, shit यार ये कार उस बोला ये वाला लेना था. ये it's a common thing. It's a vicious cycle, but that's how the business is done. You cannot stand still. You need to keep improve. You know, you need to keep innovate. Design thinking is not about packaging or designing or color and themes. It's about how things works. Okay. Secondly, there are 5 phases of design: empathy. I define the problem, ideate the problem, prototype it, and then test it. Okay. So, what are the benefits of design thinking? The benefits are you understand the customer needs. You can drive innovation into the business to stay afloat, and you can keep innovating new things. You reduce the risk of failure by iterating. You fail fast and you execute fast. You keep developing certain things and you work on to improve the experience. If something doesn't work out, it's okay. If something works out, it's okay. Okay. Enhance the customer experience because the way make my trip, go IB go, Tribi go, XB go, पता नहीं कितने साइट हैं पर इंडिया का एक ही राजा है बहुत समय से वो है मेक माई ट्रिप चल रहा है मतलब चल रहा है हैव यू एवर सीन द डिफरेंस कभी भी नेक्स्ट टाइम जब मेक माई ट्रिप में जाओगे ना जस्ट सी हाउ दे हैव क्रिएटेड इट what is the experience they are providing it. They ensure the customer experience was fulfilled. All right. So let's talk in detail about the 5 phases. Okay. So empathize. Empathize means kya? Who are my users? What matters to this person? What are the pain points? How can we improve the experience? Okay. This is all empathy. Define means what are the exactly user needs and pain problems and can you prioritize them? What are the critical pain problems for the user? Ideate means in order to solve this problem, this number one problem, how many different ways I can do to enhance the customer experience, right? ये प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आया कि फोटो अच्छी नहीं है ठीक है तो लेट्स टेक द बेस्ट फोटो इट्स वेरी सिंपल आइडिया कि अच्छे फोटो लेना है ये ना बट इट एक्चुअली बूस्ट द रेवेन्यू इमीडिएटली ओके prototype means whenever you ideate some problem you immediately need to deploy and prototype create a smaller version the MVP version of it the minimum viable product of it and then launch into the market. All right. And then what works? Just iterate on it, test it, get the feedback again. Say, is it working for you? Is it not working for you? Is it good for you? Is it not good for you? And then based on that, you can iterate, right? You can keep on iterating things. Understood? You need to understand what are design thinking. As an entrepreneur, as a owner or the entrepreneur, you need to keep thinking. So that's the beauty of design thinking. Apple does that. Steve Jobs did it. Everyone, the greatest possible businessman, Elon Musk, they have done that. For example, design thinking. How can I create a rocket which can come back to Earth? ये डिजाइन थिंकिंग है इलॉन मस्क थॉट इट राइट कि यार मैं क्यों इसको फालतू जगह मैं स्पेस में उड़ा देता हूँ इट्स $1 million लॉस फॉर मी व्हाई आई कैन नॉट लेट द रॉकेट कम बैक अगेन and reuse it again to minimize the cost. It's such a beautiful idea and it worked like a charm, right? Now everybody talk about now reusable rocket this that. But ये idea किसका दिमाग था? Elon Musk and that's why he is one of the most richest person, he's most successful person on earth. तो ये मत सोचना डिजाइन थिंकिंग बकवास है डिजाइन थिंकिंग ऑफ नो यूज डिजाइन थिंकिंग इज मस्ट it's a must have trait. Okay. You want to improve the business, design thinking. You want to improve the availability of your program, design thinking. You want to improve the scaling and selling part, you need to improve on design thinking. Always work on design thinking.